Good morning. Welcome and thank you for all of you to attend this seventh episode of CA interview International CA interview series. गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अंतरराष्ट्रीय क्राउन एम्बेसडर चैट शो में 7वें भाग में। Muy buenos días, bienvenidos a una nueva sesión de entrevista con la gerencia. This series of interview will be held on every Tuesday. यह जो इंटरव्यू की जो सीरीज है, जो श्रृंखला है, हर मंगलवार को होती है। Esta serie de entrevistas está tomando lugar cada martes. The intention is for us to learn from the success story of the Crown Ambassadors. हमारा उद्देश्य है, हमारा मकसद है कि हमें क्राउन एम्बेसडर की जो सफलता से हमें सीखने को मौका मिले। La intención de estas entrevistas es conocer más y entender más acerca de las exitosas historias de nuestros embajadores Corona. My name is SKTO and I'm your host for the day. मेरा नाम एसकेटीओ है और आज मैं इस प्रोग्राम का संचालक रहूंगा। Mi nombre es Esquitío y soy el anfitrión el día de ahora. We also have one beautiful lady, Miss Marcela from US branch to help us to translate to Spanish, and a handsome man from India to translate to Hindi. आज हमारे साथ बेहद ही खूबसूरत जो हमारे यूएस की पीआईसी मिस मार्सेला हैं हमारे साथ, जो स्पेनिश में ट्रांसलेट करेंगी और स्पेनिश को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगी, और हमारे साथ आज इंडिया से मिस्टर विजय कुमार हैं जो हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। Por supuesto, en esta sesión estaremos traduciendo, la señorita Marcela les estará traduciendo en español y Mr. Kumar estaría traduciendo para el idioma hindi. So today we have a very, how do you say, good background esteemed guest. आज हमारे साथ बहुत ही अति विशिष्ट महत्वपूर्ण जो हमारे अतिथि हैं इस शो में। Bueno, el día de ahora tenemos un invitado especial que tiene un pasado, una vida muy exitosa aquí en DXN. She is the fastest Crown Ambassador in the American region. जो कि अमेरिका के क्षेत्र में सबसे तेजी से बनने वाली क्राउन एम्बेसडर हैं। Ella es la embajadora Corona más rápida en la región de América. She is one of the most influential leaders in the entire American region for her dedication and passion for DXN. ये एक बहुत ही अति महत्वपूर्ण लीडर हैं अमेरिका के रीजन की, जो अपने कार्य के प्रति बहुत ज़्यादा जुनूनी है और बहुत ज़्यादा मेहनती हैं। En la región de América, ella es una líder de las más que tiene mucha más influencia aquí en la región de América por su pasión, por su perseverancia y por su pasión al trabajo en DXN. She joined DXN since March 2016. इन्होंने DXN में अपनी शुरुआत मार्च 2016 में शुरू की। Se unió a DXN en el año 2016, un mes de marzo. Became the first female Crown Ambassador in the United States on October 2020. और ये अमेरिका की, यूनाइटेड स्टेट की पहली क्राउन एम्बेसडर महिला बनी अक्टूबर 2020 में। Y por supuesto se convirtió en la embajadora Corona, mujer, la primera mujer de acá de Estados Unidos embajadora Corona en octubre de 2020. So let us welcome our Crown Ambassador from the United States, CA Miss Alma Zaragoza. आइए स्वागत करते हैं आज की हमारी अति विशिष्ट, अति महत्वपूर्ण गेस्ट, क्राउन एम्बेसडर अल्मा ज़ारागोजा। Así que démosle la bienvenida a nuestra embajadora Corona, la señora Alma Zaragoza. Buenos días, familia de DXN. Qué gusto saludarles. Verdaderamente es un honor, es un gusto. Gracias por la invitación. Gracias por mencionar también Alma Zaragoza.
Thank you, everyone, and good morning, everyone, and thank you for the invitation. It's a very honor for me to attend in this interview, and thank you also for the pronunciation of my name, very right, Alma Zaragoza. आप बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ आप सभी लोगों के बीच में, और खासकर मैं इस बात को देख के और ज़्यादा खुश हूँ कि मेरे जो नाम का जो आपने जो मैं उच्चारण किया है वो बहुत बेहतरीन तरीके से किया है। The pleasure is ours to have you to join our program. Bueno, el placer es de ये nosotros que usted se ha unido acá a este programa. ये हमारे लिए भी बहुत खुशी की बात है कि जो आपने आज हमारा इनविटेशन स्वीकार किया। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस शो में। So we hope that today you will share your secret to be so fast growing to become a CA. आज हम ये उम्मीद करते हैं कि आज अपने आप को गूढ़ रहस्य बताएंगे जिससे कि आप बहुत तेजी से क्राउन एम्बेसडर बनी डीएक्सन के अंदर। Y bueno, por supuesto, esperamos que el día de ahora nos comparte con todos nosotros los secretos que usted ha tenido para convertirse en una embajadora corona, la embajadora corona más rápida de la región de América. Para mí verdaderamente es un honor, es un gusto compartirles. Alma Zaragoza no comenzó hace 4 años y meses en DXN, pero tengo haciendo esta industria, trabajando en la industria de redes de mercadeo por más de 25 años. Entonces, verdaderamente, esto es algo que me apasiona muchísimo y esto no me llevaría a hacer lo que he hecho por la motivación que he tenido, gracias a mis hijos, a toda mi familia, a todo mi equipo de trabajo, a toda mi red. Eso es lo que ha hecho que Alma Zaragoza se haga embajadora corona rápido. Yeah, actually, of course, this for me to being a crown ambassador, of course, it takes me 4 years. Actually, when I joined DXN, it was 4 years ago, but I actually have a more experience, about more than 5 years, and all this networking marketing business. And of course, my biggest motivation, my biggest support is my family, my child. And so I don't gonna be what I am right now, Crown Ambassador, if it's not for without them. मैं डेफिनेटली मैं बताना चाहूँगी कि आज से 5 साल पहले मैंने अपनी डीएक्सन में अपने इस सफ़र की शुरुआत की, और मैंने अपने परिवार और बच्चे जो मेरा है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मेरे लिए उत्साह का कारण रहे, और उनके कारण ही मैं आज बहुत तेज़ी से क्राउन एम्बेसडर बनी, और जो भी मैं हूँ आज अपने परिवार और अपने बच्चों की बदौलत ही हूँ। So we will start our first question for today. Is it okay for you? अब हम शुरुआत करते हैं आपने इस प्रोग्राम की आज के पहले क्वेश्चन से। Así que bueno, vamos a empezar con la primera pregunta de este programa. ¿Está bien con usted, Alma? Estoy lista. Ready. Okay, so our first question for today session would be how did your journey in DXN begin? डीएक्सन में आपकी शुरुआत कैसे हुई? ¿Cómo comenzó su camino en DXN? Comencé en DXN gracias, hoy sí puedo decir gracias, a que la antigua compañía en la que yo estaba iba a cerrarse. Al saber que el dueño nos había comentado que iba a cerrar su compañía, que empezáramos a buscar por un hogar, por una casa a dónde irnos, fue que la persona que siempre me patrocinó a mí, ellos empezaron a buscar. Cosas, cuando nosotros las vemos desde el punto de vista, al principio las vemos como que, ¿qué va a pasar? ¿Ahora qué voy a hacer? Y gracias a Dios, que fue una bendición muy grande que esa compañía fuera a colapsar, que se fuera a cerrar, para que verdaderamente encontrara la compañía con la que hoy en día trabajo, con la que me siento muy feliz, muy contenta y muy apasionada, que es DXN.
Yes, actually, how I started in the XN, how I joined the XN, I can say I was in another company. That old company, it was going to close very soon. So in that time, which he was my sponsor in that company, he invited me actually to join the XN, right? Because that company already had like a lot of problems and everybody knowing that it's soon it's going to close. So that's why in that right moment, I can say it was like a really blessed for me, like a blessed time for me, because it was in that moment when another company closed, I jumped to the exam, which is now the business of my life. हमने जो रिएक्शन में शुरुआत करी, पहले मैं किसी और कंपनी के साथ काम कर रही थी, लेकिन वो कंपनी बहुत जल्दी बंद होने वाली थी। जो मेरी स्पॉन्सर थी वो रिएक्शन के साथ जुड़ी हुई थी। उन्होंने मुझे रिएक्शन के लिए बारे में बताया और साथ साथ मैं भी जानती थी जिस कंपनी में काम कर रही हूँ बहुत जल्दी बंद हो जाएगी, बहुत सारी समस्याएं उसके कंपनी के साथ में थी। तो जब मुझे रिएक्शन की अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने बिना किसी अपना कोई वक्त गंवाए मैंने तुरंत रिएक्शन को ज्वाइन किया और काम शुरू कर दिया। A lot of people is afraid of the company go bankrupt, and don't be afraid because DXN we have a very real company. Our everything is very stable. So please join us if you want. So let's go to the next question. Being the fastest Scrum ambassador in American region, what are the initial challenge you faced when you started DXN? अमेरिका क्षेत्र में सबसे तेज क्राउन एम्बेसडर बनने के नाते शुरुआती समय में डीएक्शन करते समय आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। Siendo el embajador Corona más rápido en la región de América, ¿cuáles son los desafíos iniciales que enfrentó cuando comenzó DXN? Pues más que nada es el inicio con una nueva compañía, los miedos que todo mundo trae cuando pasa esto. ¿Esta compañía seguirá, va a estar abierta o me irá a fallar igual que la anterior? Eso verdaderamente fue algo que todo el mundo estábamos como que si avanzamos, no avanzamos, si caminamos, no caminamos, pero el más grande, todavía muchísimo más grande reto que obtuve cuando inicié en esta industria, en esta compañía de DXN, fue que a los 3 meses de haber comenzado aquí con DXN, mi upline, la persona que me trajo aquí a DXN, se fueron y me dejaron sola. Entonces, nada más seguí trabajando con algunas de mis personas porque muchas también se las llevaron. Entonces, eso fue uno de los retos que verdaderamente hoy le puedo dar gracias a Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que te pasa en la vida es nada más, te sirve para crecer, para avanzar y verdaderamente yo tengo mucho que agradecer. ¿Por qué? Porque el señor Prajit siempre estuvo ahí, porque Alma no tiene patrocinador. Actually, of course, the fears and the challenges when you join in a new company, there is a lot, right? You face that if that new company is going to close or what is going to happen with my future. Of course, there is a lot of fears when you enter a new company. That's one part of the challenge, of course. But actually, the biggest challenge that what I have it in the exam is actually when I joined the company. 3 months later, my upline and my team, the people that what I was working with, they left. They left in another company, and I pretty much I was like by myself working and start from zero again. But actually, I have a lot of to thankful. I'm being very thankful with Mr. Prajit, of course, because thanks for him. Like I don't even have a sponsor. My sponsor is the exam, so I'm very happy with it, and I feel like that one more than a challenge, it was a blessing for me. जी हाँ, बिल्कुल सही है कि आदमी जब भी कोई नई कंपनी ज्वाइन करता है तो सबसे बड़ा डर जो होता है उसको डर होता है, चैलेंज ये होता है कि ये नई कंपनी है
पता नहीं ये सस्टेन करेगी या सरवाइव करेगी कि नहीं करेगी, कल को ये बंद हो जाएगी तो मेरे कैरियर का क्या होगा, जो मैंने वक्त लगाया मेरे वक्त का क्या होगा। तो ये सब बातें बहुत सारी दिमाग में घूमती हैं और ये भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन सबसे बड़ा जो मेरे साथ एक जो वाकया हुआ, सबसे बिगेस्ट जो मेरे बड़ा जो चैलेंज आया वो ये है कि मेरे साथ जो मेरे लोग काम कर रहे थे वो मेरे को छोड़ के, मेरे ग्रुप के लोग मुझे छोड़ के किसी दूसरी कंपनी के अंदर चले गए। वहां जाके उन्होंने काम करना शुरू कर दिया, लेकिन मैं फिर भी घबराई नहीं और मैंने अपने आप को फिर से रिसेट किया और जीरो से शुरुआत करी मैंने, और जीरो से शुरुआत करी और मेहनत करी। और उसके अंदर मैं थैंकफुल हूँ परजीत जी का, जिन्होंने मुझे हर जगह पे हर तरीके से मुझे सपोर्ट किया, मुझे गाइड किया, और जिसके कारण आज मैं फिर से अपने पैरों पे खड़ी हुई और आज की डेट में मैं कामयाब हूँ। So as I mentioned earlier, we are a real company. So that fear is already taken care of. And if you do not have a sponsor, it's okay. We have a set of training programs to help you to achieve your dreams and become a free man. So our next question is, do you think that anyone can do DXN? क्या आपके नजरिए से डीएक्शन कोई भी कर सकता है? ¿Cree que cualquiera puede hacer DXN? Por supuesto que sí. Yo siempre le digo a la gente, si se mueve o respira, es tu cliente. Puede hacer DXN. Of course, yes. I always used to tell to the people, like, if you can breathe and if you can move, you can do the exam. मैं हमेशा एक बात सभी से बोलती हूँ, ये क्या अगर आप सांस ले सकते हैं और अगर आप चलते हैं तो आप डीएक्शन को कर सकते हैं। हाँ, डीएक्शन हर कोई कर सकता है, ये सबके लिए है। Oh, so you can breathe, then you can do the exam. That is a very good statement that I have ever heard. So, as we know that you are the fastest growing Crown Ambassador, and people have fear, do not know what to do in the beginning of the business. So, how should a new distributor start DXN business, and what should they keep in mind? कोई भी व्यक्ति जब डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जो नई जानकारी रखता है तो वो डरता है किसी व्यवसाय को चुनने के लिए। एक नए डिस्ट्रीब्यूटर को डीएक्शन व्यवसाय कैसे शुरू करना चाहिए और क्या सावधानियां और क्या बातें ध्यान में रखना चाहिए? ¿Cómo debería un nuevo distribuidor iniciar su negocio de XN y qué debería tener en cuenta? ¿Cómo debe iniciar? Esto es algo bien fácil, es nada más tener claro qué quiere hacer de XN. Pero muy importante, si la persona quiere consumir o quiere hacer el negocio, eso es lo que yo tengo que tener claro qué es lo que quiere mi persona. Porque si mi persona quiere hacer el negocio igual que yo, bueno, pues le damos las herramientas, le enseñamos qué hacer su lista de contactos, hablar con sus personas, hacer presentaciones. Ahorita es presentaciones online, presentaciones por internet, todo esto es ahora. Normalmente yo trabajaba mucho lo que era redes anteriormente y lo he hecho de la forma tradicional, que era presentaciones en casa. Hace un año, tenemos exactamente un año haciendo todo lo que es por medio del internet. Pero estar claro, si el nuevo distribuidor quiere hacer el negocio, ponerlo en claro y qué es lo que tiene que hacer. Primeramente que nada, estar claro que quiere hacer de XN. Segundo, hacer su lista de contactos. Tercero, ponerse en acción y empezar a llamarle a las personas y pues hablar con la gente de lo que es el negocio, porque es de la única forma que hay que construir, porque son redes, es mucha gente construyendo lo que tú quieres. Okay, yes. Actually, I can say the first thing you have to know is if the person has already like a clear
they want to do the business. If they want to do the business, you must know that if the person want to like just be consumer, or if they want to really do the business. Now, if they really want to do the business, you have to train them. You have to start in like giving, of course, the models, giving trainings, either live trainings or even like online trainings, right? So either way, they have to train themselves if they really want to start the DXM business, of course. So first, what I have to say is this person, it has to be like a very clear that if they want to do the business, the DXM business. Second one, I can say they have to like they have their contact list, create their contact list, and then when they already create the contact list, starting to do the business, just jumping and starting to contact them, call them, or just like just do the business. So that's what I have to tell them. बहुत बेहतरीन प्रश्न है। अगर किसी को भी अगर अपना व्यवसाय शुरू करना है, तो अगर डीएक्सएम में काम करना है, तो सबसे पहले उसे एक बेहतरीन कंज्यूमर होना है और साथ साथ उसे बिजनेस के बारे में सारी बारीकियों को उसे समझना है। फर्स्ट एक कंज्यूमर बन के शुरुआत कर सकते हैं, फिर उसके आपकी शुरुआत हो जाती है बिजनेस के तौर पे। हर किसी के अंदर कुछ कमजोरियां होती हैं, कुछ कमियां होती हैं, उन कमियों को दूर किया जा सकता है बुक्स को पढ़ के, साथ साथ ट्रेनिंग लेके, चाहे वो ऑनलाइन ट्रेनिंग हो, चाहे वो ऑफलाइन ट्रेनिंग हो, और अपने और गाइडेंस के माध्यम से आप आगे बढ़ सकते हैं। एक चीज हमेशा मैं बोलना चाहूंगी, पहली बात की हमेशा बिल्कुल क्लियर रखना है अपने आप को, हर चीज के बारे में आपको जानकारी रखनी है, अपना विजन को बिल्कुल क्लियर रखना है, और क्लियर रख के और आपको क्या चाहिए लाइफ में, जिंदगी में, उसके लिए आपको काम करना है। दूसरी बात मैं एक कहना चाहूंगी कि आपके पास आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट जरूर होनी चाहिए। आपके पास लोगों की लिस्ट होनी चाहिए, जिन नए लोगों से आप बात करें और उनको इस व्यवसाय के बारे में बताएं और उनको अपने साथ इस व्यवसाय के अंदर लेके आएं। जो यही बातें मैं आपको बताना चाहती हूँ एक नए व्यक्ति को, किस प्रकार अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए दो बातें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। So contact list, those are your warm contacts. You also need to utilize the cold contact as well, but that one is for later on. So now, for cold contact, like while talking to a new prospect, what do you say that attract him to this business? जब आप एक नए व्यक्ति से, न्यू प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं, तो आप उसे क्या बताते हैं जो उसे इस व्यवसाय के लिए आकर्षित करता है और इस व्यवसाय के में वो आपके साथ जुड़ जाता है। Mientras habla con un nuevo cliente potencial, ¿qué le dice, qué lo atrae a este negocio? Esto es algo muy sencillo, porque lo que nosotros promovemos es algo que yo le digo a la persona: tú ya te tomas tu café, tú ya lo disfrutas, a ti ya te gusta. ¿Qué tal ganar dinero de algo que tú ya haces por gusto? Y de ahí es donde verdaderamente es decirle a la persona: gana dinero con algo que tú ya haces todos los días, que es tomar café, gana dinero, o que te paguen a ti te pagan por bañarte, a ti te pagan por lavarte los dientes, a ti te pagan por tomar café. ¿Qué tal una empresa que te puede pagar, que es la nuestra, que es de XN sobre todo, hablando ya de una compañía tan sólida, teniendo la credibilidad, porque la tengo, la credibilidad de los productos, de la compañía, y más que nada, a mí no me tomó mucho, más que prácticamente 4 o 5 días para darme cuenta de la calidad del producto. Cuando tú estás claro de la calidad del producto que tú tienes, tú puedes invitar a cualquier persona a que haga lo que tú estás haciendo. ¿Por qué? Porque te gusta lo que haces. Y sobre todo, poderle invitar a la persona a ganar dinero por los hábitos que ya tenemos, que es tomar café. Yeah, actually, it's very simple, right? Because it's very simple thing. Because I used to tell people that who don't like to love drink coffee. Of course, DXN no, it's not only giving you the coffee.
actually DXN is paying you for you to drink coffee. Actually, this company is paying you for drink coffee. It's paying you when you're using DXN products to shower. It's paying you when you drink your tea, your supplements. Actually, DXN it's paying you for what you love to do, which is like a drink coffee or like use DXN products, right? So, and also what I tell them is also talking about the company. The company is very solid and of course has the enough credibility of the product. Actually, for me, it's just take me like 5 days to confirm the quality of the products. And actually, what you're doing here is just teach the people how to make money with the exam products. ये बहुत ही आसान है। आसान शब्दों में बताना चाहूंगी आपको कि हर कोई कॉफी पीना पसंद करता है और मैं ये बताती हूँ कि आप जब कॉफी पीते हो तो आपको पैसा आएगा, आप जब नहाते हो शैम्पू करते हो तो आपको पैसा आएगा, जब आप चाय पीते हो तो आपको पैसा आएगा, जब आप सप्लीमेंट लेते हो तो आपको पैसा आएगा। डीएक्सन एक ऐसी कंपनी है जो आपको हर काम के लिए, आपकी हर खुशी के लिए वो पैसा देती है। बस आपको अपना ब्रांड चेंज करना है और आप डीएक्सन के प्रोडक्ट को अपने घर के अंदर लेके आना है, उसे इस्तेमाल करना है। और साथ साथ मैं कंपनी के बारे में बताती हूँ। कंपनी की बहुत ही सॉलिड बैकग्राउंड है, कंपनी का बहुत मार्केट के अंदर मान सम्मान है, कंपनी बहुत ही ईमानदार है, इसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। तो ये सब बातें ये बात भी मैं नए लोगों को बताती हूँ, तो जिससे वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं। और साथ साथ मैं लोगों को ये बताती हूँ किस तरीके से पैसा कमाया जा सकता है अपने इन सभी कामों को करते हुए। खाते पीते आप किस तरीके से पैसा कमा सकते हैं, किस तरीके से अपने जीवन में आप एक बेहतरीन आय लेकर आ सकते हैं। बस यही बातें मैं बताती हूँ और लोग इसमें इम्प्रेस होते हैं और लोग मेरे साथ जुड़ते हैं। Free stuff. Everybody loves free stuff, including me. So this is a very refreshing point. We can use this point to say like you are paid to drink coffee. Oh, that is a good one. So is after you invite them to our business, what do you think? How important is it to have a consumer in this business for a distributor to succeed? जब आप किसी को ज्वाइन कराते हैं तो एक डिस्ट्रीब्यूटर को सफल होने के लिए इस व्यवसाय में कंज्यूमर का होना कितना महत्वपूर्ण है। यानी एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास अगर कंज्यूमर है तो क्या वो कितना इम्पोर्टेंट है उसकी सफलता के लिए। ¿Qué importancia tiene tener consumidores en este negocio para que un distribuidor tenga éxito? Oh, wow, qué importancia. Pues el consumidor es la sangre de tu negocio, es el que causa tu PB, es el que hace tu volumen. Y si verdaderamente, yo lo que le digo siempre a la gente es cuando tú invitas a una persona a que sea parte de tu negocio, que haga DXN, es porque tú quieres el éxito para esa persona. Si no, mejor no lo invites, déjalo como estaba. Entonces, verdaderamente, el éxito de mi equipo, el éxito de mis distribuidores es mi éxito. Si ellos son exitosos, yo soy exitosa. Si ellos ganan, yo gano. En esta compañía es un ganar, ganar. Aquí, entre más rápido corran, entre más rápido crezcan, entre más rápido avancen, la más feliz y la más exitosa soy yo. ¿Por qué? Porque verdaderamente por eso los invité a hacer el negocio, porque quiero que tengan éxito. Si no, los hubiera dejado en su casa. Yeah, actually, I can say that the consumer is actually the blood of this business. Is the one it causes. It's the cause of this business. I always tell the people, if you invite someone, it's because you want to do the business and you want them to do the business too. And the success of my distributors is my success. So the faster they advance in this business, I'm the happier person in the world. So I always tell them, you have to do the business, you have to be in success, and it's going to be also my success.
मैं हमेशा अपने जो डिस्ट्रीब्यूटर उनको बताती हूँ कि प्रोडक्ट को कंज्यूम करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और अगर आपके पास कंज्यूमर है तो वो आपकी एक सफलता की गारंटी है। और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस व्यवसाय में। अपने आप को सफल करने के लिए आप प्रोडक्ट खरीदते हो, आपके साथ साथ अगर आपसे भी कोई प्रोडक्ट खरीदता है तो आपको अपने व्यवसाय में सफलता की एक गारंटी देता है, क्योंकि इसके अंदर आपको अपने पीवी की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके पास कंज्यूमर है। तो कंज्यूमर बहुत ज़्यादा, एक हिसाब से मैं कहूँगा कि एक ब्लड का भी सेल का काम करते हैं, एक बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेंथ देने का भी काम करते हैं। तो कंज्यूमर एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास होना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और डिस्ट्रीब्यूटर का एक कंज्यूमर होना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। So consumer is equally important to distributor. But what if the consumer wants to go? You want to help the consumer to go a higher level. So how do you think to convert a consumer to become a distributor? एक कंज्यूमर को आप किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूटर में बदलते हैं, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। ¿Cómo convertir un consumidor en distribuidor? Esa es la pregunta más fácil. ¿Por qué? Es bien sencillo. Tu mejor consumidor, tu mejor cliente, el cliente más satisfecho va a ser tu mejor distribuidor, porque esa es la persona que verdaderamente está apasionada, está enamorada con el producto. Eso es lo único que necesitas para moverlo a que ahora gane dinero. Eso es lo más importante. Yo les digo, mi mejor consumidor, mi persona más feliz, más contenta consumiendo mi producto va a ser mi mejor distribuidor, es el que habla con esa pasión, es el que habla con ese amor, es el que está enamorado y puede hacer que cualquier persona quiera consumir sus productos, porque verdaderamente eso es lo único que necesitas. Un consumidor súper feliz, súper contento y súper enamorado de lo que hace. Oh wow! Actually, this a very simple question too, with a very simple. Your best consumer is gonna be the most satisfied. If the person who's gonna be more satisfied with the products. Actually, that consumer, if he's very happy with the products, if we're very satisfied, he's gonna become to your best distributor. So that person is gonna be is gonna make the business with love. It's gonna be happy to do the business with the XM products. So actually, I can say when you offer a product or a consumer, if this consumer is really satisfied with the product, this is gonna become your best distributor, and that person is gonna do the business with love, with happiness. So this is going to be your best distributor too. ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसकी एक पहचान है कि एक जो अच्छा कंज्यूमर है, जो प्रोडक्ट से बहुत ज़्यादा उत्साहित है, उसको बहुत प्रोडक्ट से बहुत ज़्यादा खुश है और वो सेटिस्फाइड है उस प्रोडक्ट से, तो वो कंज्यूमर एक बेहतरीन डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता है, एक बेहतरीन आर्नर बन सकता है, जो डीएक्सएम के प्रोडक्ट से बहुत ज़्यादा खुश है और साथ साथ सेटिस्फाई भी है। तो साथ साथ एक वो बेहतरीन आर्नर भी बन सकता है, तो उसको इस बिजनेस में आसानी से लाया जा सकता है। और मैं यही करती हूँ कि जो हमारे सेटिस्फाइड जो मेरे कंज्यूमर होते हैं, उनको मैं बिजनेस के बारे में बताती हूँ और इस व्यवसाय में उनको लेकर आती हूँ, जिससे वो अपनी एक अल्टरनेट इनकम की तरफ वो आगे बढ़ सकें। So we have a lot of training programs waiting to be used and to teach the distributor to become successful. So what do you think in is more important, product knowledge, marketing plan knowledge, or other special knowledge? आप इनमें से क्या अधिक महत्वपूर्ण है एक डिस्ट्रीब्यूटर के लिए? प्रोडक्ट नॉलेज, मार्केटिंग प्लान की जानकारी, या कुछ अन्य विशेष प्रकार की जानकारी? ¿Qué es más importante? ¿Conocimiento del producto, conocimiento del plan de mercadeo u otro conocimiento especial? El conocimiento te da poder.
pero que lo pongas en acción. Si no, nada más el conocimiento te paraliza. Es muy importante todos los conocimientos. Entre más conocimiento tú tengas, eso es muy importante, pero recuerden algo, a veces la persona lo que más necesita es la emoción que el conocimiento. El conocimiento es muy bueno, claro que sí, por supuesto que es importante. Entre más sepas del conocimiento, pero puesto en acción, accionando. Si no, el conocimiento nada más se queda aquí en tu cabeza. Mucho análisis causa parálisis. Es mejor ponerte en acción. Esto no tiene ciencia. El producto es producto, el café es café. Cualquier persona se toma un café allá afuera y con la calidad del que tiene el de nosotros, sin necesidad de hablar tanto, sin necesidad de decir tanto. Yo escucho a una persona con mucho conocimiento y escucho a alguien que está súper emocionada y eso es lo que atrae, eso es lo que cautiva, su emoción. Por supuesto, que si tienes de todo en las manos, muchísimo mejor. ¿Por qué? El conocimiento es poder, siempre y cuando lo pongas en acción, si no nada más te paraliza. Yes, actually, the knowledge is give you power, but if only if you use it well. The more knowledge you have it, the better you will go. Sometimes the person what needs is more emotion. Of course, knowledge is important too. Knowledge you have to know about the product, you have to know about the everything, right? It's very important, but it's more important the emotion, the what you put in your business. This has no science. Everyone takes coffee, everyone likes coffee, so the products are there. Actually, the products talk for themselves, so you don't need any science. Of course, knowledge is important, but it's more important if you use this product, but with a lot of emotion. जानकारी ही आपका एक ताकत है और ज़्यादा जानकारी कभी-कभी घातक भी हो सकती है। तो जानकारी अगर आपके पास है, वो ताकत है आपके पास जानकारी की, उसको अगर सही तरीके से अगर हम उसका इस्तेमाल करें, तो बहुत सावधानी से उसका अगर इस्तेमाल करें, तो हम बहुत जल्दी कामयाब हो सकते हैं और बहुत अच्छी तरह कामयाब हो सकते हैं। हाँ, बिल्कुल ट्रेनिंग का बहुत ज़्यादा महत्व है और ट्रेनिंग हमें नॉलेज देती है और साथ में हमें एक हिसाब से हमें उत्साहित करती है अपने आप को सही करने की और सही दिशा में हमें ले जाने के लिए। और इसके साथ-साथ आपको एक इमोशन की भी ज़रूरत होती है। एक नॉलेज के साथ-साथ इमोशन भी आपका काम करता है, आपका लगाव भी काम करता है, आपका एक पैशन भी काम करता है आपको आगे बढ़ाने के लिए। और साथ-साथ प्रोडक्ट नॉलेज होना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी होगी, आप आसानी से अपनी बात को दूसरों को समझा सकते हैं। लेकिन इसके साथ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपका उसके साथ लगाव होना, उसके साथ आपके इमोशंस का जुड़ना और आपको काम करने के लिए आगे बढ़ते रहना। तो ये सभी बातें आपके लिए बहुत ज़्यादा एक डिस्ट्रीब्यूटर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस व्यवसाय में सफल होने के लिए। So knowledge is very important, but if you do not know how to use all this knowledge, it is useless. So remember, learn it and use it. And also remember, do not use, do not just memorize and just present it to people. You have to show people the passion. Then you will be more successful. So now, to our next question. Since now is a pandemic time and there's a lot of restriction, so how has the virtual meeting and online technology helped you in these challenging times? आज के जो महामारी के समय में बहुत सारी फिजिकल मीटिंग्स मार्केट में बंद हो चुकी हैं, तो इस पैंडेमिक के समय में वर्चुअल मीटिंग और ऑनलाइन तकनीक ने आपकी किस प्रकार मदद की है इस चुनौतीपूर्ण समय में अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए? ¿Cómo le han ayudado las reuniones virtuales y la tecnología en línea en estos tiempos difíciles? Esto ha sido una de las bendiciones más grandes con esta pandemia, porque mucha gente verdaderamente ha entrado en conciencia cómo verdaderamente apreciar y cuidar su salud y sobre todo que lo podemos hacer online
que ahora no tengo que viajar hasta otros países, que no tengo que andar del estado en estado, que tengo que subirme en avión y bajarme de otro, nada por eso. Desde aquí de casa, hoy estoy, gracias a esta tecnología, estoy viéndolos a ustedes hasta India, estoy con ustedes y me siento súper afortunada, súper bendecida. Yo en mi casa, ustedes en India me están viendo y verdaderamente la tecnología vino a apoyarnos, vino a ayudarnos, vino verdaderamente a mí. Yo no era mucho de tecnología, yo no era mucho de crear un canal en YouTube, más sin embargo, esta pandemia, esto que vino a pasar, me hizo hacer un canal de YouTube. Esto me hizo poder transmitir cada martes, cada jueves y cada sábado por medio de Facebook, cuando antes no lo hacía. Yo nada más una vez por semana transmitía cuando iba con ustedes, Marcela, a DXN, a Walnut, California, a las oficinas centrales, cada semana, una sola vez. Pero de ahí no patrocinaba. Ahora, gracias a esa tecnología, puedo patrocinar por medio de las redes sociales, la gente me manda mensajes que se quiere afiliar, y es gente que jamás se hubiera conocido si no es por medio de esta tecnología. Yeah, actually, I can say that this has been one of the greatest blessings of this pandemic. Because many people have known how to take care of their health, especially. And now, actually, they don't even have to travel to another side to do trainings for others or meet another people. Actually, you can see me right now. I'm doing a meeting, and all of you are watching me from India, and I know from another part of the world. So this is actually amazing. I'm doing now meeting, and of course, like too many people I know is watching me. Actually, before I used to not like take care too much about the internet or social media. Now I have my own YouTube channel, which I always do videos and trainings and everything. Before I used to just go to the office and do my live in the office is only once in a week. But now I actually doing trainings or videos like every day, and it's amazing because before I used not use this platform to sponsor another people, but actually now I can even sponsor another people because they contact me and thank for the social media and everything. So that's amazing. The technology, how easy it is just amazing. मैं ये बात बहुत ही उससे कह सकती हूँ कि मेरे लिए ये जो कोविड आया, महामारी आई, एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी के तौर पे आई। और यहाँ पे बहुत सारे लोग जो अपनी सेहत के बारे में बहुत ज़्यादा वरीड थे और अपनी सेहत का ध्यान रखने में कुछ लोग सक्षम थे, कुछ लोग नहीं भी थे। और कुछ लोग क्योंकि सेहत का ध्यान भी रखना था और महामारी के समय में हम मीटिंग के लिए ट्रैवल नहीं कर सकते थे, कहीं जा नहीं सकते थे। और पहले जो हम मीटिंग करते थे वो वीकली हुआ करती थी। लेकिन आज देखो, ये सोशल मीडिया का ही माध्यम है कि आज मैं यहाँ से बैठ के ये चैट शो कर रही हूँ और मुझे भारत के लोग, इंडिया से बहुत सारे लोग मुझे देख रहे हैं, पूरे विश्व के बहुत सारे लोग मुझे देख रहे हैं और मुझे जान रहे हैं। मैंने इस महामारी के दौरान अपना एक यूट्यूब चैनल भी बनाया। मैं उसके अंदर रोज छोटे छोटे वीडियो बना के पोस्ट करती हूँ, अपनी इंफॉर्मेशन पोस्ट करती हूँ, छोटे छोटे ट्रेनिंग के मॉड्यूल में उसके अंदर पोस्ट करती हूँ, उससे लोगों को जानकारी मिलती है। बहुत सारे लोग, ये सोशल मीडिया की तो कमाल है कि बहुत सारे लोग मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से कांटेक्ट करते हैं और मैं उनकी स्पॉन्सरिंग भी करती हूँ। तो इससे मेरे व्यवसाय में बहुत ज़्यादा गति मिली और मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ। तो एक हमने जो चुनौती थी, यानी कि एक जो समस्या थी, एक हमारा प्रॉब्लम था, उसको मैंने एक अपॉर्चुनिटी में बदला। कोविड-19 मेरे लिए एक बेहतरीन अवसर लेकर आई और यही तो बहुत ही बेहतरीन खूबसूरती है डीसी। I agree with Miss Alma Zaragoza that the only blessing in this pandemic is that this virtual online have forced us to go online to learn all this and learn how to take more care of our health. So the pandemic is not all bad. There's also a good side. Now,
that what is the importance of status recognition in DXN business, do you think? डीएक्सएन के व्यवसाय में, बिजनेस में आपके स्टेटस का रिकॉग्निशन का क्या महत्व है, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। ¿Cuál es la importancia del reconocimiento del título en DXN Business? Decirte que verdaderamente, como tú lo mencionabas, la pandemia, por supuesto, que ha traído muchas situaciones difíciles para todo el mundo y verdaderamente yo lo siento de igual forma que todo el mundo, pero si tú lo puedes ver, muchísima gente que no estábamos involucradas en lo que es el internet lo pudimos hacer y verdaderamente lamentamos todo lo que ha pasado alrededor del mundo. Y volviendo a tu respuesta, a tu pregunta, perdón, la respuesta para mí es, por supuesto que el título es importante, es que verdaderamente tú estés haciendo lo que tú veniste a crecer a una empresa. Por ejemplo, yo vine a crecer a una compañía, yo vine a trabajar para una compañía y si hay trabajo de por medio tiene que haber un título en el cual se acredite a lo que tú estás haciendo. Yeah, well, actually, as you mentioned, right, everything is important. As you all mentioned about the internet is important, and in this pandemic, also the recognition, I think, is important. My answer for this question is the position, the recognition of the new status is very important because it's like a reward your own work. Like me, I know, like I came to this company to work hard, and of course, I know the part of my reward is my recognition of the status. बहुत ही ज़्यादा हर चीज़ का एक महत्व है और हर चीज़ का अपना अपना महत्व है और उसी हिसाब से देखा जाए तो एक पोजीशन और एक रिकॉग्निशन भी व्यवसाय में होना एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात होती है। क्योंकि मैंने भी एक दूसरी कंपनी से मैं जब डिएक्शन में आई तो मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की। ऑफ कोर्स जब मैंने मेहनत की तो उस मेहनत का जो रिवार्ड है वो एक पद के रूप में, एक रिकॉग्निशन के रूप में मुझे मिला और ये मुझे क्या सबके लिए एक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि जो आप काम करते हैं उसकी आपको एक पहचान मिले, उसके लिए आपको एक सम्मान मिले। So now that we know that a lot of our DXN members and distributors are older generation, but now we have a lot of younger generation coming in. So what would you like to tell the younger generations on DXN as a full-time career? आप पूरा समय कैरियर के रूप में डीएक्शन, इस पर युवा पीढ़ी को क्या बताना चाहेंगी? ¿Qué le gustaría decirle a la generación más joven sobre DXN como una carrera a tiempo completo? Decirles que se enfoquen, que estén claros, que verdaderamente si quieren dedicarle el tiempo completo a DXN, se lo dediquen, que no pierdan el tiempo. Hay una sola cosa en esta vida que jamás vas a recuperar y eso se llama tiempo. Imagínense si los muchachos de hoy en día se enfocan verdaderamente en lo que quieren. Vamos a tener embajadores corona que van a estar llegando rapidísimo, sobre todo si le están dedicando el tiempo completo a DXN, que esta carrera verdaderamente vale la pena. Esta compañía es una compañía que les va a transformar la vida, que les va a dar libertad de tiempo, que les va a dar libertad económica y lo más extraordinario, van a estar saludables. Así que verdaderamente con todo el amor, con todo el cariño, decirles que lo hagan, que lo tomen en serio y que verdaderamente se enfoquen en hacer que su negocio les funcione y no pierdan el tiempo, que eso es lo único que jamás van a volver a recuperar y sobre todo, si ellos son jóvenes, ahorita tienen toda la energía, tienen toda la vitalidad y pueden enfocarse, es nada más enfocarlos, enseñarles el camino y verdaderamente ellos pueden hacer maravillas, ellos son el futuro de esta compañía.
Yeah, well, actually, I can say that my best advice to tell the new generation is they have to be very focused and very clear in what they want. If they really want to do the exam business, you have to do it in a full time. If today you are someone like young people, of course, just trying to be focused in business, focus in the exam business, and soon we actually gonna have like a lot of crown ambassadors in a short period of time. So this is something great. So I can tell you, if you are young, you have to take advantage of your youthness, and of course, do as much as you can in the exam business. Take this business seriously and focus. Don't waste your time, because remember, the time is the only thing that you're not you cannot recover. So take advantage of your strongness, of your youth, so you can do too many things. You can have freedom. You can have health. You can have too many things in the exam business. You have a great future in this company. बहुत बढ़िया। मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि आपको अपने जो युवा लोग हैं अपने भविष्य के बारे में बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए, बिल्कुल कोई डाउट नहीं रहना चाहिए उनको। आप डिएक्शन को हर समय कर सकते हैं। आपको फोकस रहना है, जो भी काम आपको करना है उसके ऊपर आपको ध्यान केंद्रित करके उसको बहुत सीरियसली उस कार्य को आपको करना है, आप डिएक्शन अगर कर रहे हैं तो। और ये बहुत ही कम समय में आपको सफलता की सीढ़ियां पहुंचाने में, आपके सपनों को पूरा करने में डिएक्शन आपकी मदद कर सकता है। और अगर आप यंग हैं, आप जवान हैं, तो आप इसका फायदा उठाइए। आप अपने इस जोश का आप फायदा उठाइए और डिएक्शन को बहुत ही सीरियसली करिए, समझ के इसको करिए, अपना समय बर्बाद ना करें। डिएक्शन को आप तुरंत चूज करें, तुरंत डिएक्शन को आप करना शुरू करें, डिएक्शन में काम करना शुरू करें, क्योंकि जो ये समय चले गया तो ये वापस नहीं आने वाला। समय कभी भी वापस नहीं आएगा, तो इस समय का आप इस्तेमाल करें। डिएक्शन करने से आपको आजादी मिलेगी, आर्थिक स्वतंत्रता की, फ्रीडम ऑफ टाइम मिलेगी आपको, आपको बेहतरीन स्वास्थ्य मिलेगा, आप कहीं भी आ जा सकते हैं, फ्रीडम आपको कहीं भी आने जाने की है, कुछ भी आप कर सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, साथ साथ आपको पैसा भी मिलेगा। तो डिएक्शन में आपका एक बेहतरीन फ्यूचर के रूप में डिएक्शन आपका एक बेहतरीन विकल्प है, डिएक्शन आपके कैरियर के रूप में एक बेहतरीन विकल्प है। मैं ये सलाह देना चाहूंगी जितने भी हमारे यंग व्यूअर्स हैं, यंगस्टर्स हैं जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, वो डिएक्शन को अविलंब तुरंत डिएक्शन को करें, और डिएक्शन से आपके सभी जो चीजें हैं आपको आसानी से प्राप्त की जा सकती हैं। Waste no time. There is a limit of time that we afford to lose daily. Like we have fixed time, like to sleep, to eat. Those are fixed. We cannot waste anymore. But the rest of the time are easily wasted. So don't waste time. You are racing against the time. So you need to focus. Like what we always say, don't look left, don't look right. Look straight into the exam. So focus is most important aspect in this business. Now that we have already covered most of our question, now we would like to know, what can you share with us your best story about yourself in the exam? क्या आप हमारे साथ, हमारे दर्शकों को अपनी डिएक्शन से जुड़ी सर्वश्रेष्ठ अनुभव साझा करेंगी? ¿Puede compartir con nosotros su mejor historia sobre usted en DXN? Por supuesto que sí. Mi mejor historia en DXN fue el día, pues ha sido un transcurso, un lapso de 4 años y 7 meses. Hoy en día, prácticamente próximo mes, ya tengo 5 años, mi 5º aniversario en DXN, pero el día más hermoso de una de mis historias en DXN fue el día que yo califiqué para embajador Corona. ¿Cómo fue hacerte sentir importante,
desde todas las atenciones que tuviste tú, Marcela Rivera, conmigo, ese contacto, ese estar ahí, ese mandarme mis emails, ese mandar mi corona, mi banda, esa emoción de que todo el señor Valdir estaba ahí. Ah, el doctor Lin me grabó un mensaje, mi tío de igual forma, los embajadores coronas con los cuales yo he tenido contacto, cada uno de ellos mandaron ese video de felicitarme. Um, Mis distribuidores me mandaron también flores, igual que ustedes en DXN. Mi familia, toda junta ese día, mis 4 hijos me pusieron parte de mis pines, mi banda, mi corona. Y verdaderamente fui coronada por mi familia de sangre, pero aparte de eso, toda mi familia importante estuvo ahí. Agradezco verdaderamente todos esos detalles de todos estos embajadores Corona, como he tenido el contacto con ellos y que verdaderamente eso es cómo sientes esa familia de tu negocio que es de XL, que verdaderamente sí somos una familia. Eso para mí fue algo de las cosas más bonitas. No que nadie más, tu familia de sangre, pero también tu familia de tu negocio estuvo ahí para verte. Ah, Verdaderamente bien agradecida con todos y cada uno de mi familia de XM Estados Unidos. Ustedes han sido súper especiales para mí, ustedes han sido ese apoyo, ese support que yo he tenido y yo estoy muy, muy agradecida, Marcela. Muchas gracias y verdaderamente ha sido parte de esa emoción, de esas cosas bonitas, ¿no? De que has estado siempre ahí para mí. Y tú eres parte de esa historia, de eso bonito que Alma ha vivido y tú lo has disfrutado conmigo. Tú has visto cómo hemos crecido, cómo nos hemos divertido, cómo hemos pasado cosas de repente difíciles, porque hay subidas, hay bajadas, pero han sido más bonitas. O sea, las bajadas rápido lo esperamos y nos vamos a lo que verdaderamente vale la pena donde te enfocas. Gracias, Marcela. Y verdaderamente, mija, compárteles eso bonito que hemos vivido juntas, que hemos estado ahí con el señor Fayid, cómo verdaderamente ese hombre ha sido extraordinario en mi carrera en DXN. El entrenamiento, cuando da todo Dr. Lindsay G, 2 meses después de que yo comencé en DXN, vino personalmente a entrenarnos con nosotros aquí en Estados Unidos. Entonces, todo eso bonito es lo que verdaderamente todo vale la pena. Todo vale la pena. Yeah, well, actually, I can say, right, like almost 5 years in the extent. It's a long journey, and of course, if I have to say one of the most important moment in this career for me, for sure, it was when I become a Crown ambassador, and that all the attention from the staff, from Marcela, from Mr. Prajit, all they make me feel like a real special. They send me flowers to my house. They send me my pin. They created a unique event for me with they recording a video from Dr. Lim and Mr. Tio. Of course, all the Crown ambassadors they send me message in this event. My family was part of that special day, and actually, I feel that I was truly crowned by my family, and that is something I really appreciated because all those details that you all have with me that makes me feel like really special. And of course, I want to share with all of you that we are family. We are actually a DXM family. And that day, I will feel the power, the love from my business. And my business is also my family. So that day, I really feel like a really special, and I can confirm that we all are a DXM family. Of course, I want to share that with Marcella, with Mr. Pradeep, all the staff. We sharing like incredible moments, of course, and happy moments, like bad moments, but challenging moments.
but this is all together. It becomes a nice journey for me, and actually, I realized that how blessed I am because actually Mr. Brigitte support me a lot. I can say that since I started with the exam, I just had in like 2 months, and he and Dr. Lim came to USA to give us a special training to all our group. So that was really amazing for me. I really feel special, and yeah, I can say that it's a long journey. It's a grateful and a special journey that altogether it makes me feel so happy and thankful. जी हाँ, मैं कहना चाहूँगी कि 5 साल डिक्सन में काम करते हुए ये बहुत मेरी लंबी यात्रा है। और मैं जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आपसे शेयर करना चाहूँगी, जब मैं क्राउन एम्बेसडर बनी, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि ये अचानक से मेरी पूरी की पूरी दुनिया ही चेंज हो गई। मिस्टर परजीत और हमारे जितने भी स्टाफ थे, वो मेरे घर पे आए और मेरे को बहुत उन्होंने मेरे को मेरा सम्मान किया। और साथ-साथ वीडियो वीडियो भी आई, डॉक्टर लिम के द्वारा मैसेज आए, वीडियो के मिस्टर तियो की तरफ से भी मैसेज आए। और साथ-साथ ये भी नहीं, इसके अलावा जितने भी क्राउन एम्बेसडर्स थे, उन्होंने भी मुझे विश किया और मेरी टीम के लोगों ने भी मुझे बहुत ज़्यादा खुश हुए। उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे एनकरेज किया। और साथ-साथ ये मेरे परिवार के लिए एक बहुत ही बेहतरीन और यादगार क्षण थे। मेरे परिवार के सभी लोग खुश थे और सब लोगों के लिए एक स्पेशल दिन था। ऑफ कोर्स कि जब मैं काम कर रही थी, मेरे पास आज ताकत भी थी, मेरे पास आज पैसा भी था, मेरा बिजनेस भी अच्छा बढ़ रहा था। और ये जो सारा बिजनेस है, ये सब चीज़ें, ये मेरे परिवार के लिए तो है। ये मेरे परिवार भी इसको आगे चल के मेरा परिवार भी आगे इसके अंदर शामिल हो सकता है। मेरे परिवार के लिए ही ये बिजनेस है और मेरा पूरा परिवार इसके साथ बहुत खुश था। हाँ, बहुत सारे चैलेंजेस आए, इसके अंदर प्रजीत जी ने मेरा बहुत साथ दिया और इसके अंदर खुशी भी थी, कभी कुछ दिक्कतें भी थी। वो हर जगह पूरे स्टाफ ने मिलके मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। ये मेरे लिए एक हिसाब से स्वर्ग के जैसा था। मुझे लगता था कि मैं बिल्कुल स्वर्ग में आ गई हूँ और क्राउन एम्बेसडर बनने के बाद तो मेरी पूरी दुनिया ही चेंज हो चुकी थी। और साथ-साथ मुझे सभी लोगों ने, डिक्सन के सभी स्टाफ ने, प्रजीत जी ने और डिक्सन के सभी स्टाफ ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। सब लोगों ने, डॉक्टर लिम ने हमें और मेरी टीम को एक बहुत ही बेहतरीन ट्रेनिंग दी, जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा अपने आप को गौरवान्वित मैं महसूस करती हूँ। ये सब मेरे लिए एक बहुत ही महान क्षण थे, महान पल था। ये सब संभव हो पाया डिक्सन के माध्यम से। So that is a very good experience that I have ever heard. So now this is the final question, and I love to surprise all our interviewee. Where do you see yourself in the next 3 years, and what is your next achievement? अगले 3 साल में आप खुद को कहाँ देखती हैं और आगे क्या होगा? ¿Dónde te ves en los próximos 3 años? ¿Qué sigue? ¡Wow! ¡Qué bonita pregunta! Bueno, pues específicamente me sigo viendo en DXN y lo más extraordinario, con muchísimos de mis diamantes que se me conviertan en diamantes coronas, en embajadores coronas, yéndome con ellos a los TCIs, disfrutando del estilo de vida que ofrece DXN y por supuesto transformando vidas, apoyando a otras personas que puedan ver, que puedan visualizar el gigante que es DXN, lo que DXN puede aportar a la vida de cada ser humano, riqueza, salud, felicidad, y verdaderamente que lo vivan, como gracias a Dios lo estoy viviendo yo. Esto es algo único. Wow, what a nice question. Actually, I can say that specifically, I see myself, of course, in a DXN,
But the most extraordinary thing that is to see my diamonds become crown ambassador and go with them to a TSI trips. So I want all of them, and of course all of the rest of the people can see how beautiful, how amazing the exam is. The exam, with the exam, they will have a health, they will have good financials, they will have happiness how I have it right now. Of course, thank God I have totally happiness in the exam, and I wanted also they to have the same as me. बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है ये। जहां तक मैं समझती हूँ, जो महसूस करती हूँ डीएक्शन में, कोई भी एक साधारण डिस्ट्रीब्यूटर डायमंड बन सकता है और डायमंड से क्राउन एम्बेसडर वो बन सकता है। मेरा जो अध्यय है कि उन सभी को, जो लोग रह गए हैं, जो डायमंड हैं, उनको सबको क्राउन एम्बेसडर बनाना, उनको सफलता की तरफ आगे ले जाना। और ये मैं कह सकती हूँ कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है ये डीएक्शन में ये सफर मेरा। और उन सबको भी इस सफलता को मैं खूबसूरती से उनके जीवन में मैं लाना चाहती हूँ। और साथ साथ इसके साथ उनके जीवन में स्वास्थ्य, समृद्धि और खुशियां, ये भी उनके जीवन में लाना चाहती हूँ। और जो कि मुझे ये सब मिला है, तो मैं भी चाहती हूँ कि ये सब उनके पास हो। और यही उम्मीद से मैं काम कर रही हूँ। और इसी उम्मीद से मैं अगले 3 वर्षों में मेरा यही ध्येय रहेगा कि सभी को एक अच्छी पोजीशन पे लेके पहुंचना। So that's it from our fastest crown ambassador in United States market. So thank you all of you for watching and staying with us until the very end. And we will have the same series episode next week at the same time. So I'll see you next week. Go Crown and good morning.